Just a second. Huh? नोटेड। अर्नेम हो गया लिख के बेटा। Yes, sir. Prisha, Daksh, done? So please wait a minute. Yeah, sure, sure. Done, sir. चलो गुड। प्रिशा हो गया बेटा लिख के। शाबाश। So now we are the first hand information is with us. The triangle, right angle triangle. So these are the basic trigonometric functions which we'll be dealing with. With this comes the we should have more awareness about the quadrants of a circle. Okay. So these are the quadrants. This is 0 degrees, 90 degrees. This is 180 degrees. All of you have that protractor or D with you, right? With which you measure the angles. So this Yes. is 270 degrees. Usko pura kar lo. You can make it a complete circle or disc. And this is again 360 degrees, right? So let's name, just to have a demarcation between other angles and these angles. Let's call these angles as reference angles. We will call these angles as reference angles for the quadrants. Okay. All these angles, 90 degree, 180 degree, these are reference angles. Okay. This is a reference angle and this is a reference angle. So first quadrant is in between 0 degrees and 90 degrees. Second quadrant is in between 90 and 180. Third quadrant is in between 180 and 270. And fourth quadrant is in between 270 and 360. I समझ आया बेटा ये? All of you understood this? 0, between 0 and 90, first quadrant, between 90 and 180, second, 180 to 270, third, and 270, 360, fourth. Now, every quadrant has its own set of standard angles. We are just giving them a name, right? Because we will be using those angles very frequently, and the entire start of trigonometry is based on those angles. So these are the standard angles of the first quadrants which I am trying to draw here. So this is 45 degrees. This is 30 degrees angle, and this is 60 degrees. So these are the three standard angles of first quadrant. Understood, all of you? These are the first three standard angles of the
first quadrants. First quadrant. How to get standard angle of other quadrants? It's very simple. To find the standard angles of second, third, and fourth quadrant, we add or subtract the standard angles of the first quadrant from the respective from the reference angles of the respective quadrants. ठीक है? Just read that line, read that statement, please. एक दो बार पढ़ लो बेटा उसको. ठीक है? So, which are the standard angles of the first quadrant? 30, 45, and 60 degrees. Reference, suppose I want to find the standard angles of second quadrant. मुझे second quadrant का standard angle निकालना है. Which are the reference angles for second quadrant? 90 and 180. ठीक है Arnim? So, what I'll do is, to 90 degree, I will add all these standard angles. 90 plus 30, 90 plus 45, 90 degrees plus 60 degrees. This is 120 degrees. This is 135 degrees. And this is 150 degrees. Or you can also get these angles by subtracting the standard angles from the second reference angle. Second reference angle is which angle? 180 degree. So 180 में से we subtract 60 to get 120. We subtract 45 to get 135. And we subtract 30 to get 150. So this set of angles, this is how we get the standard angle of second quadrant. समझ आया बेटा? Can you do it for third and fourth? Note this first. Note this slide and then please find the standard angles for third and fourth quadrant and write your answers in the comment window. Very good, Arnim. शाबाश. नोट किया कि नहीं? पर स्लाइड नोट करना है बेटा, नोट्स बनाना है ना?
Very good, Prisha. Very good, Daksh. ऋषभ फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर निकाला. Very good. So you guys got it very correct. For second quadrant, it is 210, 240, and 225. For fourth quadrant, it is 300, 315, and 330 degrees. Right. So let's move ahead to the next awareness of the quadrants. So I'll draw it again. Now, remember, pay attention, huh? All of you. Always remember that this is all sine, tan, and cos. So in first quadrant, so I'll write it here. What does this mean? I'm trying to explain it to you. Trigonometric values of all the angles. See, I'm focusing, our focus is on sine, cos, and tan as of now. You are aware that those are, you can inverse these and get cosecant, cosec, sec, and cot. So focus is on sine, cos, and tan. So trigonometric values of all the angles are positive in the first quadrant. A simple rule to remember, memorize. Trigonometric values of all the angles are positive in the first quadrant. ठीक है. तो जितने भी एंगल होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका साइन कॉस टैन, द वैल्यूज ऑफ sin, cos, and tan of all the angles is positive in the first quadrant. Clear? This information is clear to all of you? Good. Second statement. Sine of all the angles is positive in the first quadrant. Sorry, in the second quadrant, my bad. In the second quadrant. Or I should write only sine. So this, I am talking about sine, cos, and tan. वो बाकी तीनों की बात नहीं कर रहा. Because cosecant will be positive. It is inverse of sine. So only sine of all the angles is positive in the second quadrant. So what does that mean? Which angles will lie between 90 and in the which angles will lie in second quadrant? All the angles between 90 and 180? Yes or no? So it starts from 90, ends before 180. So all the angles between those in the second quadrant, sine of 90, sine of 91, 93, 94, 92, 92.5, 179.5, all sine will be positive. ठीक है? Cos and tan will be negative. I'll write here. I'll just mention here. Cos and tan will be tan of these angles will be negative in second quadrant. So this is the nature of the quadrants, right? So next is only tan of all the angles is positive
in the third quadrant, right? So here sine and cos are negative. Sine and cos of these angles are negative, right? Fourth one is only cos of all the angles is positive in the fourth quadrant. So between 270 to 360 degrees, cos of all the angles is always positive. So you need not have to give it a thought also. क्यों होगा क्यों नहीं होगा, no reasons. So here sine and tan are negative in the fourth quadrant, right? You guys understood these rules or not? Have clarity about these rules or not? Arnib, any queries, any doubts you have in your mind? Just I'm reading through that. Okay, read it. Risha, going through it? Okay. So if you have understood this, then please answer. Just mention the signs of these angles. Sine of 120 degrees, whether it will be positive or negative, that's it. This will do. Cos 225 degrees. You please excuse me for my poor handwriting because my fingers are a little bit shaky as of now. I was recovering from heavy, high fever and all. So tan of 330 degrees. Just mention positive or negative. That's it. Okay. Please mention the signs of, only signs of these values. साइन मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव बताना है, ठीक है? 1 to 5. Note these rules and then do this exercise. Sir, we have to tell signs in which quadrant? See, 120 degree will lie in which quadrant, Daksh? There are 4 quadrants, right? Yes, sir. First quadrant lies between which angle, which reference angles? चेक करो, नोट्स में चेक करो. One, sir, 90 0 and to one. 90. नहीं 0 to 90. First quadrant is 0 to 90. नोट्स में लिखा है कि नहीं? Yes, sir. है ना, लिखा है ना. 0 to 90 is first quadrant. 90 to 180 is second quadrant, 180 to 270 is third, and 270 to 360 is fourth quadrant. ठीक है Daksh? So Yes. 120 degree angle lies in which quadrant? First or second or third or fourth? Sir, first, बेटा first 0 से 90 हुआ ना? so 90 to 180 में lie करता है 120. हाँ, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? Sir, सेकंड हुआ? second. Yes, sir. सेकंड हुआ, सिंपल है ना ये. Yes, अब sir. सेकंड क्वाड्रेंट में which trigonometric value is positive? चेक करो, देखो दिखा है. सेकंड रूल्स पढ़ो. Only sine of all the angles is positive in the second quadrant. So sine of 120 degree will be what? Positive or negative? Sir, positive. Positive. Arnim, you understood this case? Sine of 120 degree will be positive. Prisha, समझ आया बेटा? Sure? देखो, please don't hesitate to ask. ठीक है? You will ask me. It will be very good for me. ठीक है? Chaos नहीं होगा कभी भी.
Similarly, let's do this. Let's do this together. 225 degrees. What do you have to say about this, Arnim? Let's do it with you. 225-degree lies in which quadrant, Arnim? Third quadrant. Third quadrant. In third quadrant, which trigonometric value is positive? 10. Tan. Very good. So this is what cos of 225. So this will be positive or negative? Negative. Negative. Got it? All of you? Daksh, Prisha? Yes, sir. That is how you Yes, need sir. to write the other signs also. Please do it quickly. प्रिशा करना है, मैं करूं बेटा एक और तुम्हारे साथ कि तुम कर लोगी अब Sir, क्या? एक you want me to do one with you, one example? Sir, I want to ask the fourth one. Okay, chalo. You tell me. 240-degree lies in which quadrant? Third quadrant. Third quadrant. Third quadrant में tan is only tan is positive. Yes, sir. So sign will be what? Positive. नहीं, sign Sir, will be negative. Sir, negative. negative. So negative. Understood? Okay, sir. Yes, sir. Thank you. Most welcome. लिखो लिखो जल्दी लिखो. And please solve mention this answer in the comment window. Rest of it, right? We have done at least, yeah, we have done 3, 4. एक ही बाकी है 150. करो उसको लिखो. If you are done writing it, please type done. Good, Annem. All your answers are correct. Thank you, sir. Noted? Noted the rules? Yes, sir. Okay. Prisha, हो गया बेटा? Dak, share the answer, Sir, beta. please give me 2 minutes. Yeah, sure. Please take your time.
Done. Prisha, Daksh, हो गया बेटा? Sir, I have written. Okay, but you have not sent me the answers. Sir, what हाँ, answer? ये पॉजिटिव नेगेटिव बेटा. Just you have to mention first is positive, second is negative, third is Okay, positive or sir. Okay, negative. sir. Okay, sir. That's it. Prisha, हो रहा है बेटा? Sir, first one is positive, rest are negative. Yes, very good, very good. Prisha, hello, Prisha. Yes, sir. Actually, I'm struggling through some network issues. That's a no worries. But you understood the concept or not? Yes, sir. Yes, sir. Huh? So last one will be negative or positive, Prisha? Just to confirm. Negative. Negative. Shabash beta. So now, once you are aware about this, let's draw the trigonometric table. This table is what you have to memorize, and I'll give you the small trick or small tool to memorize also. So you will learn about it. You can draw the table with me. Zero, 30, 45, 60, 90, 1, 270, and 360. This is for functions and angles. Chalo. So let's write the values first, and then I'll show you the way to remember it. Okay. It's not a trick, it's a way to remember it. So first column is for functions, the trigonometric functions. These are the angles. Sine, cos, tan, cosec, sec, and cot. Sine of 0, please एक बार देख लो बेटा इधर. Sine of 0 is 0. Sine of 30 is 1 by 2. I'll just quickly write it and then you can copy it. Sine of 45 degree is 1 by root 2. Sine of 60 is root 3 by 2. Sine 90 is 1. So sine 90 is 1. Sine 180 is 0. Sine 270 is -1. Sine 360 is 0. Cos 0 is 1. Cos 30 is root 3 by 2.
This is 1 by root 2. Cos 45 is 1 by root 2. Cos 60 is 1 by 2. Cos 90 is 0. Minus 1. This is 0. This is 1. Tan is the ratio of sine to cos. So tan 0 is, just take the ratio 0. This is 1 over root 3. This is 1. This is root 3. This is not defined. 1 upon 0 is not defined, right? In a fraction, if the 0 appears, it is not defined. So this is 0. This is again not defined. This is 0. Cosec 0 is 1 upon sine. Cosec is 1 upon sine. So this is not defined. This is 2. This is root 2. This is 2 over root 3. Just inverse sine, huh? This is 1. You have to excuse me for, I'm very sorry for my poor handwriting. Huh? Matlab, I cannot help. My fingers are actually shaking. So cosec 180 is not defined. This is minus 1. This is not defined. Sec is 1 upon cos. So this is 1. This is 2 over root 3. This is root 2. This is 2. This is not defined. Minus 1, not defined, and 1. Cot is 1 upon tan. So this is not defined. This is root 3. This is 1. This is 1 over root 3. This is 0. This is not defined. This is 0. This is not defined. Okay? So here, if you can see, always remember this relation. Sine theta always lies between, value of sine theta always lies between minus 1 and 1. Sorry, my bad. This is plus 1 and this is minus 1. Cos theta also lies between 1 and minus 1. Okay? Always remember this. Please note it. इसको याद करने का ट्रिक सिखाऊंगा बेटा अभी, है ना? याद सिर्फ तुम इतना कर लोगे ना, अगर देखो क्या याद कर सकते हो वो बता देता हूं. If you actually memorize these two parts, सब काम हो जाएगा. तो वो भी अभी सिखा दूंगा कैसे क्विकली मेमोराइज हो जाएगा. ठीक है? बट मीनवाइल लिख डालो इसको जल्दी से.
Once you have noted it, please type done, huh? Or please tell me, let me know. You can say done also. So Prisha is done, Arnim done, Daksh, Shabash. Chalo. So I'll help you learn how to remember it. ठीक है? कैसे याद रखोगे भाई? देखो सिंपल है. Draw two. We started with right angle triangle, है ना? तो draw two right angle triangles. एक ट्राइंगल ऐसा जिसमें it's an isosceles triangle, and the second triangle is the angles are in the ratio of 1 is to 2 is to 3, that is 30, 60 and 90. The angles are in the ratio of 30, 60 and 90. So this is 45 degrees. This is 45 degrees. है ना? This is 30. This is 60. And this is 90. ये क्लियर है बेटा सबको? दक्ष, Prisha and Arnim. Yes, sir. Shabash. So now these sides will be 1 and 1 and root 2. ये तो निकाल सकते हैं आप लोग. 1, 1, root 2. Here, the side opposite to 30 is 1. The side opposite to 90 is 2. ये ध्यान रखना है बस. 1 or 2. This will be root 3. Now, ये यहां तक समझ आया सबको? All of you? No, sir. अच्छा. क्या नहीं आया बेटा? Prisha? First, you have to सर draw the ये जो triangle. आपने वैल्यू पुट की है ना हाइपोटेन्यूज हाँ. परपेंडिकुलर बेस की वो बेटा सुन, ये ना मतलब कुछ वैल्यू हमें ये याद रखना है कि when we are drawing a triangle 30, 60, 90, तो मुझे ये वैल्यूज याद रखनी थी. ठीक है? मुझे ये टेबल की वैल्यूज याद रखनी है. ठीक है प्रिशा? ओके ये सर सारी वैल्यूज याद रखनी है. अब ये ओके ऐसे याद रख लूं, या मैं यहाँ एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लूं और फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकता हूँ. कर सकते हैं ना ऐसे हम लोग फिर? यस सर तो 30 के ऑपोजिट लिखना है तुम्हें 1 और 90 के ऑपोजिट लिखना है 2. ये कर सकते हैं 30, 60, 90 बना के. बस ये इतना याद रख लो. 1 और 2 तो याद रहेगा, इजी है याद रखने के लिए. ये साइड निकाल सकते हैं. यस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर -1 उसका रूट. यस यस अब याद रहेगा ये. यस और सर 45, 45 वाले में ये 1 होगा, ये 1 है. अगर ये दोनों 1 तो रहेंगे ही क्योंकि आइसोसेलेस है, तो ये रूट होगा. यस सर ओके थैंक यू अब मुझे बताओ साइन 30 आप इजीली याद कर सकते हो कि नहीं? यहाँ से 1/2. यस सर Similarly, sin 60 we can write it as √3/2. है ना? All of you kids, Arnim, Daksh, समझ आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. प्रिशा अभी डाउट क्लियर है बेटा ये वाले? यस सर शाबाश. तो प्लीज मे ड्रॉ these triangles also just for your reference. चले आगे. चलिए मूव अहेड. Okay, sir. हम्म. So I'll take another 10 minutes of yours. चलेगा कि there is no rush? Yes, sir. A very important thing I want to teach you now.
So how to find, see, now what we know is, we know the standard angles of the first quadrant, the trigonometric values of standard angles of first quadrant and all the reference angles. ठीक है? So how to find, the question is, how to find quickly, huh? How to find or to find the trigonometric values of the standard angles of the second, third, and fourth quadrant. ठीक है? First step. Write the angle as a sum or difference of the reference angle and the standard angle of the first quadrant. As the reference angle, इसको लिखो of the respective quadrant, जिस भी quadrant का वो angle है, and the standard angle of the first quadrant. क्या मतलब हुआ इसका, पहले ये समझाता हूं. देखो इधर ध्यान से सब लोग, all of you please pay attention. Suppose it's given to me as sine 120 degrees. So Arnim, 120 degree lies in which quadrant again? Second quadrant. Second quadrant. Which are the reference angles for second quadrant? Or reference angles also. The 180. 90 and 180. 90 and 180. So 90 and 180. तो 90 में ऐड करेंगे और 180 से माइनस करेंगे, तभी सेकंड क्वाड्रेंट मिलेगा बेटा. तो 90 में क्या ऐड करेंगे? Which standard angle should be added? 30. Very good. Which should be subtracted? 60. Very good. All of you understood this? Yes, sir. Okay, good. So now comes the next part. Second, if the reference angle, देखो ये 11th में सीखते हैं बच्चे, ठीक है, और तुम अभी सीख के जाओगे, तो इसलिए ध्यान से सुनो. If the reference angle is an odd multiple of 90 degrees, then the function sine or cos of the angle converts to function cos or sine of the standard angle. क्या मतलब हुआ इसका? Please pay attention. By odd multiple of 90, what do I mean? So 90, all the reference angles are multiples of 90. 90 into 1, 90 into 2, 90 into 3, and 90 into 4. Right? So this is 90, 180, 270, and 360. Now tell me, which one are odd multiples of 90? Prisha, Daksh? 1 and 3. 1 and 3. 90 These are and odd multiples. 270. Very good. And these are even multiples of 90. Yes or no? All of you? Yes, sir. Yes. Shabash.
So now check. Here, this reference angle is odd multiple of 90, right? हाँ ना बोलो बेटा. अरे say yes or no. Sir, can you repeat the question? My question is, read the rule. It says ज्यादा मत बुलवाओ. चलो, तो ये बोलता है कि if the reference angle is an odd multiple of 90. So this reference angle is odd multiple or not? Yes, sir. So ये तो E1 है, तो E1 का तो रूल अभी मालूम नहीं हमको. So this reference angle is odd multiple. It says if the reference angle is an odd multiple of 90, then the function sine. कौन सा साइन? ये वाला साइन. साइन और कॉस को ऑब्लिक, मतलब अगर कॉस होता तो कॉस की बात करते, साइन होता तो साइन की बात करते. देन द फंक्शन साइन कन्वर्ट्स टू द फंक्शन कॉस ऑफ द स्टैंडर्ड एंगल. तो ये इस पूरे एंगल का जो साइन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉस में. किसके कॉस में? ये स्टैंडर्ड एंगल के कॉस में. दो 2 मिनट प्रोसेस कर लो, फिर एक और एग्जांपल दूंगा. और अभी कोई डाउट है तो आता है पूछो, आई विल एक्सप्लेन. डोंट राइट, सिर्फ प्रोसेस कर लो. मैं लिखने के लिए आई विल गिव यू टाइम, डोंट वरी. ठीक है. हर नेम प्रिशा दक्ष. दक्ष, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. I'm there, sir. समझ आ रहा है Listening. बेटा कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. प्रिशा, आपको समझ में आया बेटा? सर थोड़ा सा तो डाउट है। हाँ पूछो, कहाँ डाउट आया? तुम बताओ, पूछो ना, मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा. क्यों घबरा रही हो? मत मत हेजिटेट करो, डोंट हेजिटेट. सर ये कन्वर्शन का क्या है, थोड़ा वो देखो समझ में देखो, आया। मैं फिर से समझाता हूँ. हाँ, मान लो कॉज मैं लिखता हूँ. 1 मिनट. हाँ, मैं सपोज करो लिखता हूँ कॉज ऑफ 330. I can write this as cos 270 plus 60. Yes or no, Prisha? यस सर। तो अब क्या क्या चेक करना है बेटा? पहले ये रेफरेंस एंगल चेक करना है. ये कैसा रेफरेंस एंगल है? ऑड मल्टीपल, इवन मल्टीपल? ऑड। तो ऑड मल्टीपल है तो रूल नंबर 2 फॉलो होगा. इफ द रेफरेंस एंगल इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्रीज, आ गया. देन द फंक्शन साइन और कॉस. यहाँ पे कौन सा फंक्शन है? कॉस है. ठीक है प्रिशा, हाँ ना बोल रहा है बेटा? यस सर। तो cos of the angle, by angle I mean this complete angle, cos of this angle converts to, जब cos है तो किस में कन्वर्ट होगा? साइन में कन्वर्ट होगा. साइन ऑफ किसका? द स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एंगल. एंगल। दिस इज द स्टैंडर्ड एंगल. ओके सर। वहां पे ऊपर यही किया था. यस सर। समझ आया बेटे? यस सर। शाबाश. तो नाउ आई गो अहेड विद माय थर्ड रूल नाउ. मैं बोल नहीं रहा हूं, आप लोग लिखना. हाँ, मैं लिख रहा हूं, आप लोग देख पढ़ो उसको.
तो यहाँ पे साइन और कॉस कन्वर्ट चेंज नहीं होते, सिर्फ मेन एंगल से स्टैंडर्ड एंगल बस बचता है. जस्ट रीड इट वंस, आई विल बी बैक इन अ मिनट. So I'll explain this to you. देखो, let's do this sine 120 only. I can write it as sine 180 minus 60. So this is even multiple, yes or no? बच्चों हाँ ना बोलो बेटा. Yes, sir. Yes, sir. So simple है. Since it is even multiple, so sine will change to sine of 60 degree. That's it. Sine of this angle converts to this angle. Understood? Yes, sir. Prisha? Okay. So both of you understood Arnim and Daksh? Please switch on your camera, kids. अब Yes, इसमें लास्ट एक जो है वो ये है कि प्लेस appropriate signs in the final values according to the quadrants in which the angles are situated. Okay? Arnim and Daksh. इसका yes, क्या sir. मतलब होगा बेटा? 120 degree lies in which quadrant? Daksh, can you please Sir, switch on your second. camera, kids? ये काली स्क्रीन देख के पढ़ाने में मजा नहीं आता है. सर मेरा इंटरनेट कुछ अच्छा नहीं चल अच्छा रहा है अच्छा, अभी. ठीक है ठीक है, सर हॉटस्पॉट नेट कर रखा है. कोई बात नहीं. तो 120 डिग्री ये कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा? पॉजिटिव के सर नेगेटिव? सेकंड सेकंड. सेकंड में पॉजिटिव होता है, साइन के नेगेटिव होता है? सर पॉजिटिव पॉजिटिव. पॉजिटिव. तो cos 30 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है कहां से? यहां से. देखो cos 30 डिग्री क्या होता है? √3/2, राइट? तो cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 निकालनी है, टेबल देख के, और इसके सामने पॉजिटिव साइन लगा देना. दिस इज द मीनिंग ऑफ ओके. लास्ट स्टेटमेंट. cos 330 डिग्री, it became sin 60. sin 60 from where will we find sin 60? यहां से. sin 60 टेबल में क्या दिखाता है? √3/2. ठीक है दक्ष? यस सर यस सर. So this is positive in fourth quadrant. Clear? एक और एग्जांपल दिखाता हूं. Let's do it together, all of us. Sine of 240 degrees. So I'll do an odd and even दोनों करता हूं मैं इसका. Sine of 180 plus 60 और साइन ऑफ 270 माइनस 30. चलेगा बच्चों? यस सर अरे यस. मेरा मेरा गला खराब है फिर भी बोल रहा हूँ, तुम लोग तो ठीक हो ना? बोलो भाई. तो यस ये सर. कैसा मल्टीपल है? चलो ये वाला रक्ष, ये कैसा मल्टीपल है बेटा? ऑड सर की? ये कैसा मल्टीपल है? ऑड मल्टीपल है 90 का कि इवन बेटा? सर इवन इवन. इवन है ना? तो साइन रिमेन साइन.
और इसके बारे में क्या विचार है? दिस इज ऑड मल्टीपल, है ना? यस सर, और है। तो साइन कन्वर्ट्स टू कॉस ऑफ 30 डिग्रीज। नाउ ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा बेटा? थर्ड या सेकंड या थर्ड? सर थर्ड। थर्ड में साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? सर नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव लगाना है बेटा। सिंपल है। इसकी वैल्यू कहाँ से देखेंगे? जो टेबल ड्रॉ किया था वहां से देखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास -√3/2। साइन 60 की वैल्यू देखनी है हमको। साइन 60 इज √3/2। ठीक ओके। है, दक्ष समझ आया कि नहीं आया ये? आए सर। है सर ना? टेबल याद करना पड़ेगा उसके बाद। बस 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 बस। और ये रूल्स दो चार बार देखो अभी। व्हाट इज योर होमवर्क? होमवर्क इज राइट, ये जो मैंने लिखा है ना, राइट साइन कॉज वैल्यूज ऑफ साइन कॉज एंड tan वैल्यूज ऑफ ऑल द स्टैंडर्ड एंगल्स ऑफ थर्ड सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन कॉज और tan वैल्यूज लिखनी है किसकी? सारे स्टैंडर्ड एंगल्स की, सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके ठीक सर। है। हम्म, ओके सर। इसको नोट कर ले बेटा। और इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट। और जस्ट एक काम करो तुम, मैं तुम्हारा टाइम बचाता हूँ। देखो ये मेरा नंबर है, ठीक है? यू कैन पिंग मी हियर। अच्छा, राकेश मिश्रा को नहीं भेजना है मुझे। दिस इज माई नंबर 9574375555। यू कैन पिंग मी, आई विल सेंड यू द व्हाइट बोर्ड नोट्स ऑफ टुडे सेशन। ठीक है? ओके सर। सर हो गया। हाँ, और ये रिकॉर्डिंग भी आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। ओके सर। ठीक है। सो हाउ वाज द सेशन? समझ आया बेटा आज का? यस सर। चलो ग्रेट, थैंक यू। थैंक्स सर।